So we start with the normalization. The normalization is what? It is a scientific method which is used to break down the complex table structure into the simple table structure by using certain rule. By using certain rule, we can break down the complex table structure into simple. To avoid the redundancy, okay, we have to use a normalization. Redundancy को remove करने के लिए normalization use करेंगे. It is a method of breaking down complex table structure into simple by using some kind of rule. It has the following benefit. What are the benefit it contains? It helps in maintaining data integrity. Data integrity means which is used to checking all information that you store, it is correctly written or not. Integrity means it is not allowing the other user to modify the information. या आपको कोई दूसरा आदमी को अलाउ नहीं करेगा आपका इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए. It helps in simplifying the structure of the table. टेबल का स्ट्रक्चर सिंपलीफाई करेगा, therefore making a database more compact. So it is helping the reducing the null value. Null value that we are using the normalization to remove this null value means blank space you have to remove. So null value increase the complexity of our program. So it is helping you to remove this null value. Okay, so null value that already we discussed, it is called the missing information. जो सारा missing information है उसको हटाने के लिए वो normalization हम use करेंगे. The next है some rules that should be followed to achieve a good database design are. One is each table have an identifier. Every टेबल के पास एक आइडेंटिफायर होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी की. तो एवरी टेबल हैज अ आइडेंटिफायर. वी कैन से दैट इज इट इज ए प्राइमरी की. मतलब वही की को यूज करके हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करेंगे. ईच टेबल should store the data for a single type of entity. सपोज आप एक स्टूडेंट का टेबल बना रहे हो तो उस टेबल में सिर्फ आपका स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रहेगा. So every table should store the data for a single type of entity. Column that accept null value should be avoided. Okay. जो कॉलम में आपका null value रहेगा उसको आपको अवॉइड कर देना है. ओके. The repetition of the value and column should be avoided. जो repetition है मतलब जो value आपका repeat होगा इसको आपको avoid करना है. Okay. ये समझ में आया? What is the rule? First आपका जो suppose आप student table बना रहे हो तो student table में आपका सिर्फ student का information रहेगा. Column that accept null value should be avoided. जिस कॉलम में आपका null value रहेगा इसको आपको निकाल देना है. The repetition of the value and column should be avoided. जिस कॉलम में आपका value repeat होगा उसको भी हमको हटा देना है. Okay. So next point, normalization is the result of satisfying the certain normal form. There are the normal form we are used. Okay, the normal form that we are using, that is
fast normal form, second normal form, third normal form and BCNA. तो 4 नॉर्मल फॉर्म हम यूज करेंगे, जिसको यूज करके हम क्या है ना एक टेबल को, कॉम्प्लेक्स टेबल स्ट्रक्चर को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो पहला है फास्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन बॉयज को नॉर्मल फॉर्म. एक नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ना, आपका टेबल को ब्रेकिंग करना है. सो टू ब्रेक द टेबल, टू ब्रेक द complex table into simple, that we are using normal form. So every table is having what certain kind of rules. So every normal form में एक तरीका का rules रहता है, वो rules को आपको follow करना पड़ेगा. First, our table is in a unnormalized form. It is a unnormalized form. So by using of first NF, तो first NF में यहाँ पर use किया, second NF, third NF, then BCNF. So जब हम नॉर्मलाइज करेंगे, क्यों नॉर्मलाइज करेंगे? क्योंकि आपका टेबल ऑन नॉर्मलाइज फॉर्म में है, तो यू हैव टू ओबे सम रूल्स. आपको कुछ रूल मानना पड़ेगा, और रूल जब आप मानते हो तो ये फास्ट एनएफ में कन्वर्ट हो जाता है. ए टेबल इज सेट टू द सेकंड एनएफ. ए टेबल को सेकंड एनएफ कब बोलेंगे? इफ इट इज ओबे द रूल ऑफ फर्स्ट एनएफ एंड सेकंड एनएफ. अगर वो फर्स्ट एनएफ एंड सेकंड एनएफ का रूल ओबे करेगा तो इसको सेकंड एनएफ, टेबल सेकंड एनएफ में आ जाएगा. और एक होता है थर्ड एनएफ. टेबल थर्ड एनएफ में क्या कैसे आएगा ना, पहले फर्स्ट एनएफ का रूल ओबे करेगा, सेकंड एनएफ का रूल ओबे करेगा, थर्ड एनएफ का रूल ओबे करेगा, तभी जाकर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगा. तो लास्ट जो पोजीशन है वो है बीसीएनएफ. बीसीएनएफ इज कॉल्ड एज द बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म. बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म. तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ओबे द रूल ऑफ फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, देन कम्स टू बीसीएनएफ. तो इस सारा चीज को लेकर वो बीसीएनएफ में कन्वर्ट होता है. सो नाउ अभी ध्यान देना है, तो फास्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? A table is said to be the first NF when each cell in the table contain precisely one value. Every cell में आपका एक वैल्यू रहेगा. The guideline for converting a table into the first NF are: place the related data value in a table, further define the similar data value with the column name. तो पहला जो रूल है, place the related data value in a table. जो टेबल में जिस डाटा स्टोर करना है, सपोज आप स्टूडेंट टेबल डिफाइन कर रहे हो, तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है. ओके, सो प्लेस द रिलेटेड वैल्यू इन ए टेबल. दे शुड नॉट बी रिपीटेटिंग इन ए टेबल. ओके, जो वैल्यू आप लिखोगे सो शुड नॉट बी रिपीटेड. जस्ट अ सेकंड.
So the guideline for converting the table into the first NFR place the related value in a table, further define the similar data value with the column name. So there should not be no repeating group in a table. So first of all, a table is set over the first NF when each cell in the table contain precisely one value. Every cell में एक वैल्यू रहेगा. मतलब देखिए मैं यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ. पास एनएफ क्या बोल रहा है, एवरी सेल में आपका एक वैल्यू रहेगा. आप अगर यहाँ पर देखोगे प्रोजेक्ट कोड में कितना वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर इन प्रोजेक्ट कोड, एक सेल में दीपेश 3 values, sir. 3, 2 and 2. Yeah, so it contains the 3, 2, then 2. The first NF is saying that when you store the value, then in every cell it will it store only one value. एक सेल में एक ही वैल्यू रहेगा. तो फर्स्ट इट्स saying that. तो ये टेबल आपका फर्स्ट NF में नहीं है. एंड ये क्या बोल रहा है, प्लेस द रिलेटेड डाटा वैल्यू इन ए टेबल. सपोज मैं यहाँ पर ई कोड डिफाइन कर रहा हूँ, तो जो ई कोड का जो वैल्यू है E101, तो यहाँ पर ही स्टोर होगा. तो ये अगर E101 अगर मैं दूसरा कुछ टेबल में डालूंगा तो ये आपको एरर शो करेगा. नेक्स्ट है there should not be no repeating group in a table. एक ग्रुप में कोई repeating ग्रुप नहीं रहेगा. Okay, so there is no repeating group in a table. And every table must have a unique or primary key. Every table में एक unique और primary key define किया जाएगा. Every table must have any unique और primary key. मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई रहेगा, जैसे कि रोल नंबर हो गया, कोई सीरियल नंबर हो गया, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. So here we define in this table we define the employee code as a primary key. करेक्ट है, यहाँ पर जो सारा वैल्यू है ये सब यूनिक है. लेकिन जब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट कोड एंड आवर्स, इट कंटेन मोर देन वन वैल्यू. एक सेल में मोर देन वन वैल्यू. So your table is not now you cannot say it is in your first NF. Now you convert this table. आप एक टेबल को और एक बार इसको कन्वर्ट हम करते हैं फर्स्ट NF. जब हम फर्स्ट NF में कन्वर्ट करते हैं E101 सिस्टम E901, तो अभी क्या है ना, एवरी सेल में एक एक वैल्यू रह गया. ओके, so now it is called as a first NF, but it is not purely first NF, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपका वैल्यू रिपीट हो रहा है. So here प्रोजेक्ट कोड रिपीट हो रहा है, प्रोजेक्ट को रिपीट हो रहा है, एम्प्लॉय कोड में जो रिपीट एम्प्लॉय कोड भी. या ओके, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है ना, ये बोल रहा है जब तक आपको आपका डेटा नहीं मिलता है तब तक टेबल को तोड़ते चलो. प्राइमरी की भी नहीं तो फिर तोड़ो इसको. नॉर्मलाइजेशन क्या बोलता है, इट इज यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन द टेबल. आप ब्रेक करते चलो, जब तक आपको जो डेटा चाहिए वो नहीं मिलता है तब तक आप ब्रेक करते चलो, ब्रेक करते चलो. तो जो मेथड को यूज करके आप ब्रेक करोगे, ऐसा नहीं हम इधर उधर करके ब्रेक कर देंगे. आपको कुछ रूल ओबे करना है, और रूल फॉलो करके हम अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये जो रूल होता है इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन. सो दैट रूल कंटेन द नॉर्मलाइजेशन. ये नॉर्मलाइजेशन के यूज करके हम टेबल को ब्रेक डाउन करते हैं. तो यहाँ पर देखिए एक टेबल हो गया. तो पहले और एक बार मैं नॉर्मलाइजेशन जो फास्ट एनएफ को चलता हूँ. ये बोल रहा है a table is set to the first NF when each cell of the table contain precisely one value. Okay, place the related data value in a table, further define the similar data value with the column. There should be no repeating group in a table. कोई repeating group नहीं रहेगा. Every table must have a unique or primary key. Every table में unique और primary key value रहेगा. और यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है, नेक्स्ट टेबल को अगर हम चलते हैं, यहाँ पर हम रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम स्टोर कर रहे हैं, फोन नंबर 1 एंड फोन नंबर 2 ये दोनों है. तो अभी आप सोचिए अगर एक स्टूडेंट का एक ही कांटेक्ट नंबर रहेगा, इफ वन स्टूडेंट कंटेन
only one contact number, एक स्टूडेंट का अगर एक ही contact number रहेगा तो क्या होगा इधर, दूसरा जो फील्ड है वो ब्लैंक रहेगा. Okay, so another field is blank. If student contain only one contact number, then another field is blank. If one student, अगर एक स्टूडेंट का 3 contact number है, then आप तीसरा contact number यहाँ पर store नहीं कर सकते हो. Means this table constant is saying you that you are bound to store two contact number. If you have one contact number, other field becomes null. If you have the 3 contact number, then you are unable to store the third one. So this is the actual reason that it is not a you can say not a good form of storing the value. Okay, so here we define roll number as a primary key. Student table contains the null value. Phone number 1 and phone number 2 contain the null value. If a student has a 3 telephone number, your constraint record only 2 and leave the third unrecorded. Okay, आपका जो constraint है वो बोलता है आपको जो third value है वो record नहीं करेगा. So by applying the first enough definition to the student table, you can arrive at the table. तो एक टेबल का एक पोजीशन में हम आ जाएंगे, जैसे कि हम रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, लास्ट नेम यहाँ पर स्टोर किए, यहाँ पर रोल नंबर एंड फोन नंबर ये दोनों स्टोर किए. ओके, रोल नंबर एंड फोन नंबर यहाँ पर स्टोर किए, तो यहाँ पर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर किया. तो आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कीजिए, यहाँ पर जितना कांटेक्ट नंबर है वो उतना कांटेक्ट नंबर यहाँ पर स्टोर कीजिए, कोई प्रॉब्लम. तो हियर जो टेबल था वो टेबल को हमने दो तरीका से ब्रेक डाउन कर दिया. एक हम स्टोर कर दिए, एक टेबल में हमने स्टोर कर दिया स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रहेगा, एक टेबल में क्या रहेगा उसका कांटेक्ट का इंफॉर्मेशन, तो दोनों अलग अलग यहाँ पर हो गया. सो यू कैन स्टोर द वैल्यू. सेकंड टेबल में यहाँ पे रिपीट हो रहा है. हाँ, नंबर 2 रिपीट हो रहा है, तो सर की बात में यूनिक की में जाएगा, प्राइमरी की में तो नहीं. इसमें नहीं इसमें यूनिक जाएगा. आपका बेस टेबल कौन है, ये वाला बेस टेबल है ना, तो अगर ये वाला बेस टेबल है यहाँ पर प्राइमरी की है तो हो गया, आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया. तो डिपेंडेंट टेबल तो रिपीटेशन रहेगा. तो मतलब इसमें आप फॉरेन की डिफाइन नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं इसमें. हाँ, फॉरेन की है, प्राइमरी की. ये जो टेबल में रोल नंबर जो है ये प्राइमरी की है, ये रोल नंबर है फॉरेन की है, तो फॉरेन की में डाटा रिपीट हो सकता है. तो इट इज अ डिपेंडेंट टेबल ना, हम ब्रेकिंग करके ये डेटा को ये जो टेबल हमको मिला, समझ में आया? So as per my understanding, in primary key तो हो गया जो रोल नंबर, स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम. तो फॉरेन की में ये जो मतलब इसी प्राइमरी की के अंदर का ही डेटा होना चाहिए, लेकिन वो रिपीट हो सकते हैं. हाँ, वो रिपीट हो सकता है, लेकिन इट इज अ सबसेट ऑफ वैल्यू, रिपीट हो सकता है. ओके, इट इज अ डिपेंडेंट टेबल. हम ब्रेक डाउन किए, हमारा टेबल फर्स्ट एंड नेम में है, हम ब्रेक डाउन कर दिए, फर्स्ट एंड नेम में प्राइमरी की भी आ गया और एवरी सेल में एक एक वैल्यू है. लेकिन ये जो टेबल है ये क्या है, डिपेंडेंट टेबल, इसको हम अलग कर दिए, मतलब ये डिपेंडेंट है. अगर ये टेबल नहीं रहेगा तो इसका कोई काम एक किसका काम करने के. ओके, अगर स्टूडेंट रजिस्टर नहीं करेगा उसका कांटेक्ट नंबर कहां से आएगा. ओके, ओवरऑल ये है कि फॉरेन की में रोल नंबर 5 नहीं होना चाहिए, 1 to 4 के बीच में कितनी बार भी रिपीट हो कोई उससे मैटर नहीं करता. या करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके. So next is what, to convert the table to the second NF, you must first understand the concept of functional dependency. Second NF को जाने से पहले हमको समझना जो you have that understanding that you what is that functional dependency. Okay, the concept functional dependency is saying that a attribute A is functionally dependent upon B. A attribute A is functionally dependent on B if and only if for each value of B there is exactly one value of A.
attribute A is functionally dependent on B if and if and only if for each value of B there is exactly one value of A. This attribute B is called as the determinant. So in the functional dependency में क्या बोलता है? Suppose आप आपका रोल नंबर देते हो, जब आपका रोल नंबर देते हो आपका सब्जेक्ट का मार्क आपके पास आ जाता है, तो your subject mark your subject mark is dependent upon whom? It is dependent upon your what you can say जो मैथमेटिक्स हो गया और जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और you can say like any हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, तो ये रोल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर आप रोल नंबर देते हो तो सारा सब्जेक्ट का मार्क आपका आ जाता है. सो हियर all the marks are dependent upon your roll number, so it is a functional dependency. So attribute A is dependent upon B and B if and only if for each value of B there is exactly one value of A. So attribute B is called a determinant. यहाँ पर जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और हिस्ट्री है, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट. ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रोल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है. समझ में आया? व्हाट इज दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी? दीपेश, दिशा, आत्मज्योति. यस सर. और एक एग्जांपल ले सकते हैं. ये जो क्लास है, यू कैन से यू आर द डिटर्मिनेंट. अगर मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा तो क्लास का कोई मतलब नहीं है. डिटर्मिनेंट. ओके, so that is a dependency, functional dependency. Okay, and in other way you can say that I am the determinant. If you are not there, then there is no need to take the classes here. So consider the report table. Report table में हम कैसे dependency निकालेंगे? First of all, we define your primary key, roll number and course code is called as the primary key. Okay, so roll number and course code is called as the primary key. So in the report table, roll number and course code, there is precisely one corresponding value of mark. For the roll number and course code, there is precisely one value of marks. Okay, for the roll number and course code, particular roll number, particular course code के लिए particular mark रहता है. Okay, so for every roll number, every course code is having a particular marks. Okay, तो ये दोनों roll number के लिए एक marks रहेगा, and roll number course code there is precisely corresponding value for mark. Hence mark is functionally dependent upon the roll number and course code. Okay, समझ में आया? दिशा, आत्मज्योति. Yes sir. Yes sir. That means marks is determinant here. Yeah, mark is determinant. And if you want to symbolically represent, अगर आप इसको symbolically represent करोगे, तो roll number, course code, marks ये symbolical represent है. Roll number, course code and marks ये symbolical represent है. अगर हम graphical represent करेंगे यहाँ पर roll number, course code and marks है, तो ये graphical represent हुआ, roll number, course code and marks. Okay, you can make it as a graphical representation. Okay, तो symbolical representation ये वाला हो गया, graphical representation वाला हो गया. Then in other functional dependency are present. One is course code and course name, course code and teacher name and room number. Course code, particular course के लिए एक course code होता है. एक course code को एक teacher पढ़ाते हैं और जो teacher है एक room में पढ़ाते हैं और particular mark के लिए particular grade रहता है. A grade, B grade, A plus grade, B plus grade. तो ये सारा grade आपका mark के ऊपर dependent रहता है. तो here grade is a determinant. So if you notice here we have some column like course name, teacher name and room number. These are the attribute are partially dependent upon the whole key. Whole key means क्या होता है? मतलब कोई ऐसा एक column का value रहता है, so that value is dependent upon the two columns. Just I have given an example like if you are searching for a patient in a hospital, so I have to give the details like I have to pass the bed number, I have to pass the room number, then I am getting the exact one value.
if I'm not passing any two value over there, bed number and room number, if I'm not giving you, then you are not getting the particular person. So here, for getting a particular person, I require the two things. One is bed number and room number. So again, you can say like, ऐसा कुछ वैल्यू रहता है जो दोनों में डिपेंडेंट नहीं है. मतलब अगर आप डॉर्मेटरी में जाओगे तभी बहुत सारा बेड वहां पर पड़ा होगा. अगर आप पर्सनली कोई रूम बुक करते हो देन वहां पर कोई नहीं है. सो यू आर एंटरिंग टू द रूम देन यू आर गेटिंग द पर्सन. ओके, हियर bed number, the person is not dependent upon the bed number and room number. The person is only related to the room number क्योंकि इस रूम में एक ही बेड है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल डिपेंडेंसी. मतलब ये सिर्फ रूम के ऊपर डिपेंडेंट है, बेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं. The course name, teacher name, room number, attribute are partially dependent on the whole. This dependency is called as the partial dependency. इसको बोला जाता है पार्शियल डिपेंडेंसी. मतलब ये तीनों जो चीज है वो कोर्स कोड के ऊपर डिपेंडेंट है, रोल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इट इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी. नेक्स्ट इज your room number is dependent upon the teacher name is dependent upon the course code. Okay, so if you see here, your room number is dependent upon the teacher name is dependent upon the course name. So this type of relationship is called a transitive relationship. You can say like transitive relationship is what? If you say the relation between you and me. Okay, I just giving example of this. I know you from Venkat sir. I know Venkat sir. Venkat sir knowing you. Yes, sir. So Yes, yes. so this type of relationship is called as the what? Transitive relationship. I say I do the more specific. Okay, I interact you people also by your parents. Okay, or by Yes. some higher. So that is called as the transitive. If I ask for like you have the friend like Sumit. So I don't know Sumit. Sumit is your friend. So if I relate with the Sumit because of you. You relate with the Sumit. I am related with you. So that call as the transitive. I know you. You know your college friend. So I link up with your college friend because of you. So that relationship is called the transitive relationship. Roll number is I dependent. must say this is the best example. Yeah. So that is actually called as the transitive. Okay. So room number is dependent upon the teacher name. Teacher is dependent upon the course code. Okay. So this type of relationship is called the transitive relationship. So here, two things we have discussed. One is we discuss about the functional dependency. Another we discuss about the transitive relationship. Now this is diagrammatically it is represented like course code, teacher name, and room number. So diagrammatically it is represented in this way: course code, teacher name, and room number. Okay. So I move to the next. Now I exactly move what is the second NF. The second NF is saying what? Second NF is saying that a table is said to be in the second NF when it is in the first NF. First rule is what? It is must obey the first NF. No partial dependency exists between the non-key attribute and key attribute. पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगा. अगर फुल डिपेंडेंसी रहेगा, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा.
no partial dependency exists between the non-key attribute and key attribute. The guideline for converting a table into second NFR, find and remove the attribute that are functionally dependent only on the part of the key, not on the whole key. मतलब हम ऐसा कलम को निकालकर और एक टेबल में डालेंगे जो दो कॉलम है जिसके ऊपर आप डिपेंड करोगे तो आपको प्राइमरी की मिलेगा. रूम नंबर बेड नंबर हम अगर देंगे तो पेशेंट को हमको मिलेगा, लेकिन वहां पर पेशेंट क्या है ना बेड रूम नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, बेड नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अगर ऐसा कोई की मिलता है, ऐसा कोई कॉलम आपको मिलता है जो दोनों कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पार्शियली एक कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको अलग कर दो और एक टेबल में डाल दो. ओके, so find and remove the attribute that are functionally dependent on only the part of the key, not on the whole key. Place them in a different table. आप वो टेबल को और एक डेटा को और एक टेबल में आपको डालना. Group the remaining attribute और जितना रहा उसको ग्रुपिंग हम करेंगे. Now check that. ये समझ में आया what is second NF? Second NF में पहला क्या होता है, आपको फर्स्ट NF का रूल मानना पड़ेगा. जैसे कि क्या है आपका जो हर एक कॉलम के सेल में एक वैल्यू रहेगा और आपका एक प्राइमरी की रहेगा. ये हो गया आपका फर्स्ट एनएफ. सेकंड एनएफ को जाने से पहले आपको ये जो एट्रीब्यूट है जो कॉलम से आपको निकालना पड़ेगा, जो कॉलम एक पार्शियल एक कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट है, टोटल कॉलम मतलब जो होल की है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इस कॉलम को आपको हटा देना है. So it is a project table. In this project table, we have employee code, project code, department head, and hours. We have employee code, project code, department head, and hours. In the preceding table, would lead to the following problem. यहाँ पर insertion का problem होगा. Why there is a insertion problem? The department of employee cannot be recorded until employee is assigned a project. एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन हम स्टोर नहीं कर सकते हैं जब तक हम एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट असाइन नहीं करते. ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिकॉर्डेड until you are not assigned the project to the employee. Next is here updation problem. What is the updation problem? For the employee code, department head and department head is repeated. For an employee code is repeated, department is repeated, and department head is repeated. Any changes will have to record in every row in the employee table. Deletion: when the project finishes, the employee details are deleted. This lead to loss in the information about the department to which employee belongs. So when the project finishes, एक employee का project finish हो गया तो हम एक वैल्यू को डिलीट कर देंगे, एक प्रोजेक्ट को डिलीट कर देंगे. जब प्रोजेक्ट को डिलीट कर देंगे तो एंटायर एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन और डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगा. So let us check if the project table is in the second NF. So second NF में है कि नहीं वो चेक करेंगे. So here employee code, project code is a composite key. Employee code, project code is called the composite key. मतलब you are getting the unique value by using of employee code and project code. देखो, hours is functionally dependent upon the employee code and project code. एक प्रोजेक्ट कितना टाइम में एंड होगा ये आवर्स डिफाइन किया गया है. It is functionally dependent on each other. Department is functionally dependent upon the employee code. So department is functionally dependent on the key which is employee code. हर एक एम्प्लॉय में डिपेंडेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं है. Department head is functionally dependent upon the employee code. Department head is dependent upon the employee code. Department is dependent upon the employee code. Department head is dependent upon the employee code. To convert the project table into the second NF, you must remove the attribute that are not functionally dependent upon the whole key. So you should replace and remove the attribute and place them in a different table along with the attribute they are functionally dependent upon. Like we place all the information in the employee table, एक employee table में सारा information डाल दिए और project का information हर एक table में रहेगा. तो जो department head
ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, तो इसको हम अलग टेबल में डाल दिए और इसको हम अलग टेबल में डाल दिए। क्लियर? Yes, sir. दिशा, अर्थमैटिक, दीपेश। So there's a question. हाँ. How can we differentiate between them? Between whom? Yeah, between employee code, department head, and project code hours. देखो, If we are getting any whole data, how can we differentiate? We have to evaluate first. you have to again see that our work is what. So first of all, it is clear your motive, why you have to divide. Yeah. ये यहाँ पर बोल रहा है, अगर हम यहाँ पर कोई ये जो टेबल है, मुझे कोई डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है जब तक मैं प्रोजेक्ट इसको असाइन नहीं करता। तो ये मेरा मोटिव है। आप पहले ऑब्जेक्टिव समझो, उसके बाद डिवाइड करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट स्टोर करना है, तो मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट स्टोर करने के लिए मुझे इसको प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट का टेबल को एक जगह पर रख दिया और डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन एक टेबल में डाल दिया, तो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं एम्प्लॉय और उसका डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर कर सकता हूँ और जो प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन और एक टेबल में स्टोर कर सकता हूँ। तो इसके बेसिस में हम डिवाइड किए। ओके, गॉट इट सर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स टेबल को हम प्राइमरी और फॉरेन टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या ओके, क्लियर।